Hello and welcome from sunny Davos. I am Siddharth Zarabi and with me Hardeep Singh Puri, the Minister for Petroleum and Natural Gas. Mr. Puri, welcome to Business Today and the India Today studio here. It's perhaps a coincidence that we didn't know that we would be chatting to you just 24 hours after a significant cut in additional excise duty by the government and the consequent reduction in oil prices, petroleum and diesel. Your first thoughts as to the reason it happened now and what it really means from a price perspective. This is reflective of the Prime Minister's personal concern for the welfare of the common man, Aam Aadmi. Ji. You know, interestingly, normally when prices are very high, you would expect that the elasticity or the lack of elasticity, you would expect that demand would drop. But this month's figures which I saw, petrol consumption is 14% higher than the corresponding period the previous month. Diesel also, the earlier month. Diesel, I think also 2% or so. But that overall increase in consumption cannot conceal the fact. It conceals and it should not be allowed to conceal. I'm almost tempted to ask you about the comments about the Indian Foreign Service, but I'll go off track. Let me ask you a quick follow-up. The Prime Minister had some time ago made a pointed reference to the responsibility of states when it comes to oil sector duties. As we all know, it's not part of GST. Obviously, the BJP ruled states have responded. Many haven't. And now, as I know at least, I think a few states have started to respond after yesterday's cut. What lies behind this state-center gap in this? You know, if we were having an academic argument about different stakeholders in a system of cooperative federalism, it's a center's right to raise revenue, it's a state's right to raise revenue. That would not be a focused discussion. The fact of the matter is that a citizen of India, whether he or she lives in a BJP-ruled state or in a non-BJP government, where there's a non-BJP government, that citizen has the same rights. And there are people from all segments of society. So how can you allow a situation where a BJP-ruled state, petrol is 15 rupees cheaper than in a non-BJP state? I told my friend, the Honorable Chief Minister of Delhi, and I use my words very carefully, I said, आप कम नहीं करना चाह रहे हैं, पर मैं आपको बताता हूं, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी. वही हुआ, उन्होंने नहीं कम किया पहली रिडक्शन के बाद, तो उनको लगा कि 20%, आफ्टर फ्यू डेज 20% देयर वाज अ शॉर्टेज. नाउ यू कांट गो ऑल द वे फ्रॉम अ place X to Y to fill up long distance. But if you are in a place like Delhi and you're traveling to Faridabad or Gurgaon, etc., so instead of filling here, you fill there. तो border पता भी नहीं. तो जब 20% डीलर्स को फर्क पड़ा और ये हुआ तो उन्होंने भी कम कर दिया. मंत्री जी, केजरीवाल जी ने क्यों नहीं घटाए? उस समय क्यों नहीं घटाए जी? उनको लगता था कि इसको अगर रहो तो रेवेन्यू बहुत बढ़ती है. और उनका मैं अब क्या बताऊं, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो विज्ञापन पे, एडवर्टाइजमेंट पे तकड़ा खर्चा है उनका. सो आई डोंट नो, आई एम सेइंग दिस नॉट सीरियसली, बट आई थिंक इवन ही रियलाइज ही हैड टू रिड्यूस फाइनली. आपको क्या लगता है कि अब जो ये हुआ है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या कॉरेस्पॉन्डिंग कट्स करने? मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वी जस्ट वेरीड ऑन. आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इसके बारे चर्चा नहीं की. प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग की वर्चुअल मुख्यमंत्रियों के साथ, वहां पे तो उन्होंने बहुत फोर्सफुली कहा. कुछ लोग हमारे जो ऑपोजिशन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, उनके नाराज भी हुए काफी कि उन्होंने ऐसा बोल दिया. पर हकीकत यह है कि दे डिडंट डू इट. नाउ फॉर इंस्टेंस, you have a situation where, see, if you say that I have a right to raise revenue, but you reduce the revenue, you reduce the duties on imported alcohol. I'm not taking any names, from 300 to 150%. Another one brought it from 300 down to 120%. Now, I think after a while, you have to answer this in the court of the people. My own sense is कि जो कल किया है, of course, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है, और मैं तो अक्सर कहता आ रहा हूं, आई हैव डन अ सीरीज ऑफ सोशल मीडिया दिस थिंग, एनी प्लेटफॉर्म आई स्पीक टू, आपने मुझे आज मौका दिया. सो आई एम होपिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स, द नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स जिन्होंने पहली बार नहीं किया, दे विल स्टेप अप एंड
provide relief to the common man. पुरी साहब, राज्यों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें जीएसटी का कॉम्पेंसेशन पूरा नहीं मिला, जीएसटी में आगे बढ़ना चाहिए, कॉम्पेंसेशन फॉर्मूला बदलनी चाहिए, और अब एक कानूनी फैसला भी आ गया है कि राज्यों के अधिकार जीएसटी को लेके। नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बात तो किसी ने कहा, एक स्टेट गवर्नमेंट है, मैं उस पे यहाँ पे, क्योंकि ये मामला न्यायालय पे तक पे पहुंच गया, मैं आपको ज्यादा डिटेल में कहा, इसको जीएसटी में लाइए। आपको याद होगा जब जीएसटी काउंसिल के एक सेशन हो रही थी लखनऊ में, तो एक केरला हाईकोर्ट का शायद था, निर्णय भी था कि आप इसको काउंसिल में सामने रखिए। तो जब काउंसिल में सामने रखा तो किसने उसकी किसका विरोध किया? ऑपोजिशन स्टेट। देखिए, ये चर्चा चलती रहेगी। In a system of cooperative federalism, democracy, this charcha to a certain point is healthy. But the proof of the pudding is in the eating. अब मैंने आपको इसमें नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, आप कहते हैं अगर सेंटर ने एक्साइज किया, आप ये कैलकुलेट कर लिए आपने कितने स्टेट टैक्सेस उसमें कलेक्ट किया, उसमें से देख लीजिए। या तो आप ये पोजीशन ले लीजिए, हम समझते हैं कि ये इसका जो लाभ है हम अपने नागरिकों, हमारे जो स्टेट में रहते हैं, उन तक नहीं पहुंचाना चाहते, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। हियर इज अ क्लियर केस, November 4th, सेंटर रिड्यूस्ड बाय 5 and 10 rupees पेट्रोल एंड डीजल। Yesterday, 21 मई, सेंटर रिड्यूस्ड बाय 8 rupees and 6 rupees पेट्रोल एंड डीजल। नाउ द स्टेट्स हैव टू स्टेप अप। इट्स स्टिल a little early. मैं तो आई बीन इन द एयरक्राफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर दैट। मैंने सुना है कुछ स्टेट्स ने बात की है कि वो रिड्यूस कर रहे हैं, बट इसका जो सवाल है हमारी तरफ से, तो हम लोग इस पे फोकस करते रहेंगे। मंत्री जी, क्योंकि आपके पास समय कम है, मैं आपसे दो छोटे इसमें और बिंदु पूछना चाहता हूं। तेल बढ़ता है, एक्साइज बढ़ती है, कभी घटती है। ये जो तेल का खेल है मंत्री जी, प्राइसिंग को लेके, और मैंने इसमें एक पत्रकार के नाते बहुत साल काम किया है। दो मुद्दे सर, ये फॉरेन पैरिटी पे प्राइसिंग होती है, और उसको लेके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको भी मुनाफा कमाना है, बट हैं तो सरकार की कंपनी, देश के नागरिक की कंपनी। देखिए, तेल के खेल में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या फंडामेंटल? देखिए, आप ऐसा है, दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग का सिस्टम और दूसरा है डीरेगुलेटेड सिस्टम। जी, आपको याद होगा, आपको इंटरप्ट करूंगा, क्षमा करिएगा, डीरेगुलेटेड भी है, पर 5 महीने के लिए आप नहीं, आप मेरे को चुनाव थे। नहीं, गलत बात है ये। आप मेरे को बड़ी खुशी से इंटरप्ट करिए, पर मैं बेसिक फैक्ट्स रख दूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे याद है कि शायद 2010 में पेट्रोल के प्राइस जो है डीरेगुलेट हो गए थे, और 2014 में डीजल के जी, वो हमारी सरकार के समय 2-3 महीने बाद। देखिए, ऐसा है, पेट्रोल का दाम किस पे डिपेंड करता है? इंटरनेशनल प्राइस, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, exchange rate, which can be significant. बिल्कुल. It depends on refining margin, etc. आप किसी OMC को कह रहे हैं ये सरकार की कंपनी है, उससे I take issue. देखिए, they are responsible corporate citizens. अभी आप एक हुआ है कि हमारी 2 कंपनीज हैं जो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की हैं, they have adopted a different path. अब मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, हमारी कंपनीज ये नहीं है स्थिति के सुबह उठते हैं और उनका कोई सीएमडी मुझे फोन करता है, मंत्री जी बताइए क्या हुआ। देखिए, अगर आप करेंगे चुनाव के दौरान उन्होंने नहीं बढ़ाया, अरे चुनाव तो हमारे देश में, मैं आपको क्या बताऊं, 5 साल में हर साल होते हैं, और होते हैं तो एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। देखिए, मैं जब सिविल एविएशन मंत्री था, तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इट मे बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन वाज वेरी बैड जी। आवर ऑयल कंपनीज वुड गिव एविएशन टर्बाइन फ्यूल टू द एयरलाइन ऑपरेटर्स, एंड द एयरलाइन ऑपरेटर्स समटाइम्स वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे देम। द एयरपोर्ट अथॉरिटी, which is always at the receiving end of payments, they had to take a loan of 1,000 crore. So everybody was cushioning everybody in a way. So I think the oil marketing companies, if they are not recovering the full amounts due to them, it is because for some time they are in a position to sustain themselves through petrochemical sales and other thing. Now, are you suggesting, and this is a serious question, that we go back to a system of administered pricing,
somebody has to pay. The Congress party had a system, उन्होंने oil bonds float किया, आपको याद है? 1,40,000 crore का. Government is paying the interest. I am not. But my question, sir, was slightly different in the sense that in the last 7-8 उसका months, 3,20,000 crore देना पड़ रहा है. पहले रुके 5 महीने, फिर बढ़े, फिर 40-45 दिन. Some of them are. Sorry to interrupt you. What would you say, sir? Should be our policy towards this. मैंने आपके future के सवाल पूछा. It's a private. These are private entities. I am in no position to tell them that you have to stop this thing. You know, they are watching the situation. Now, after all, it's in their interest also that the markets remain stable, because ultimately, for a while, they may not be able to pass on their, do the full recovery because they're making money on refining margins or petrochemical. But some of these are Fortune 500 companies and are highly respectable. So they are in a situation where they will watch the situation, and as responsible citizens, there may come a time where they may suddenly start. I don't know. But today, we are in the situation where the government is assuming its responsibility for excise cut. I'm hoping the state governments will reduce their ad valorem VAT, and all the other players will play so that there is energy security, availability of energy and affordability. My final question, as a former member and a stellar one at that of the Indian Foreign Service representing India, along with other cabinet colleagues at the world's largest gathering of the business elite and the political elite, what's the message that you are hearing from people about India having navigated the pandemic, having done pretty decently well to manage Dekhiye, it's not the message what I'm hearing here. Mm-hmm. Today, thanks to media organizations like yourselves, thanks to the fact that we are integrated, that news travels through different channels and mediums with breakneck speed, India is a good story. India is a good story for 3-4 major reasons. That it was able to face the challenges of a very basic existential nature during the pandemic. हमारा healthcare sector was in neglect. 2000 हमारी सरकार बनने से पहले जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, पब्लिक सेक्टर, उसको हमने बंद करवा दिया. तो कोई जरूरत नहीं. We were not only able to manufacture a domestic vaccine. One of our companies, which is using research done at Oxford University and, patented by AstraZeneca, they've done well. A pure Indian company has done exceptionally well. And today, your vaccine has efficacy. I don't want to point you in the direction of countries which became vaccine producers and the talk is कि 38% उनकी vaccine efficacy है या वहां पे उसके consequences हुए. मेरा वो काम नहीं. दुनिया भर से there is undiluted appreciation, a little bit of envy also, I would say, that India was able to manage not only its healthcare system, but on so many other respects. Our foreign direct investment, देखिए जो अभी latest figures आए हैं, $84 billion. What was the foreign direct investment coming in 2004? $4 billion. 20 गुना. You look at the unicorns. You used to produce one unicorn. अभी वो कितना पिछले साल 43 unicorn. I mean, I forget the figure. I was speaking in Bangalore yesterday and I gave some figure that the expectation this year there'll be 50. I mean, I hope people know what a unicorn is. I mean, somebody asked me a question which I was slightly taken aback and I said, look, this shows that innovation and entrepreneurial skills and talent are at a premium. And you don't become a unicorn because you and I like each other or, we're in. I mean, there is a global financial dimension where the support comes. And, United States, the lead economy in the world, $20 trillion, 18-20 जितना भी होगा. आप देखिए वहां स्थिति क्या है. Highest levels of inflation in 50 years. UK, जिनका हमारा 190 साल का संबंध रहा है जिनके साथ, steepest decline in living standards since the Second World War. Another economy, second largest in the world. Very high inflation. Very high inflation. Second largest economy in the world. अब नाम नहीं लेता हूं, $12 trillion की. Cities in total closed down. तो ऐसा है कि इसमें मुझे या आपको narrative नहीं बनाना है. The very fact that various sectors, मुझे तो जितने sectors के साथ जानकारी है,
सिविल एविएशन इज बैक। हमारे इस महामारी के पहले 4,20,000 पैसेंजर होते थे दिन में, यू आर बैक टू दैट लेवल। मैं आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात ऑलरेडी कर दी है। मैं कई और में ऑयल एंड एनर्जी, आई कैन टेल यू, look at what we have done in the last few months in terms of clean energy, biofuels. 2030 का टारगेट था हमारा 20% ब्लेंडिंग का, उसको हम 2025 तक ले आए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि 10% ब्लेंडिंग होगी। पिछले 3 महीने में every day we were doing 10%. That's why this average came up to, for the year, came up to 9.8. And people don't realize that it's not just Russian oil that is being blended, it is ethanol. Ethanol, Russian oil भी, देखिए आप पॉलिटिकल आप कुछ भी कह सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कहीं भी हो आप, तेल इज नॉट ए पर्सन जिसके पे छाप लगा होता है। पता है कहीं तेल निकलता है कहीं से, प्लेस एक्स, राइट? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, some have high sulfur content, some don't. There people buy, a ship goes from here to there. But how can I tell you, पिछले साल हमने जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा टोटल इंपोर्ट्स हुआ 0.2% of our total imports. उसका कारण है, उसकी जियोग्राफिकल कारण है कि आपको अगर आपके देश के नेबरहुड में तेल मिलेगा तो वहां से खरीदोगे, पर अगर आपको खरीदना पड़ेगा तो लोग खरीदेंगे। देखिए इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज बायोफ्यूल्स, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ईएनपी, वी आर रेजिंग इट फ्रॉम, कितने हमारे सेडिमेंट्री बेसिन है, 26 है, 7-8 थे, मैंने पूरे सब में ले जा रहे हैं। इफ आई हैव माई वे, देयर विल बी अ वेल इन एवरी backyard, including yours and mine. You didn't speak about the IFS issue because we've had a. IFS में. It's being called arrogant. Your cabinet colleague has answered that. No, जयशंकर जी ने जवाब दे दिया। मैं एक ही चीज कहना चाहूँ, ये IAS का UPS का इम्तिहान होता है, इसे इम्तिहान देना पड़ता है, फिर पास होते हैं, फिर अंदर आते हैं। So thank you. Thank you, Mr. Puri, as always. That was Union Minister Hardeep Singh Puri from Davos answering questions that are important for you and me. If you've been, thank you very much for watching. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.